So let me first begin by saying hearty congratulations, not just from me, but from my listeners and everybody who's there on my channel. I put out a story saying I'm going to interview you guys, flooded with messages. तो मेरा जब तक आप लोग यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहे थे आई वॉज रिप्लाइंग टू मैसेजेस सेइंग कुछ क्वेश्चंस है तो भेजो आई आस्क देम डायरेक्टली मैं ऑनलाइन तो नहीं लेके आ सकती हूँ बट आई शो यू द इंटरव्यू लेटर सो बिग एफएम पे दिस इज आरजे राशि एंड you know it's very funny 1994 Sushmita Sen opened a whole horizon of opportunities स्पेशली उन लड़कियों के लिए इनफैक्ट आई थिंक इंडिया में हर घर में एक लड़की ऐसी जरूर होती है जो आईने के सामने एक बार खड़े होकर कहती है ना वहां से लेके अभी तक इट्स बिन 3 decades ऑलमोस्ट एंड द कंपटीशन हैज गॉटन टफर आजकल की जो गर्ल्स हैं उनको पता है कि हमें क्या चाहिए दे आर वेरी फोकस्ड बट टेल मी आर यू गाइस स्टिल नर्वस और या फिर नर्वसनेस अब खुद हो गई है नाउ यू आर लाइक यस क्वींस नहीं अब तो नर्वसनेस सारी जा चुकी है आई थिंक नर्वसनेस से वो I'm very happy to know that. Now, let me first ask all the three of you separately about your journey, but मैं सिनी से शुरू करना चाहती हूँ. Bro, accounting and financing, ठीक है, पढ़ाई कर ली है, उसके बाद अब Femina Miss India. How did this happen? ये कैसे switch हुआ? And people have also been calling you a superstar struggler. You know, which is a very nice place to be at क्योंकि लोगों को पता है कि struggler है but she is also a superstar. How has this journey been, yeah? Well, I'm really thankful for, giving me that title. But so my mom, dad both belong to the hospitality industry. So at start when, I was studying and I had to choose courses and streams, I really thought accounts and finance made sense to me because I could take ahead my dad's business and, I would help him whenever he needed me. We would be a close-knit family business. But I still remember this. I was in college, 11th grade, sitting in my library, studying for an exam that was 1 hour away. And this lady walks up to me and she comes to me and she's like, you have the face and you have the body. You just need to build your personality. And we could work on you and we could we could claim you as a model and we could book you as, sign you as an agent. And she's just, talking such fancy words and, model, book, agency. And I was just looking at her. मैं यहाँ पे बैठ के डेबिट और क्रेडिट देख रही हूँ कि ब्रो मेरा मैथ नहीं हो रहा है दो मेरा टैली नहीं हो रहा था and I'm just looking at her and I laughed at her. I'm like, ma'am, listen, I'm really not interested because I have an exam in an hour. And so she just, she was very adamant and she just told me that, but please promise me you'll think about it. And I just said yes, so that she leaves. But I started laughing. Like, why has she come to me out of everyone? The exam got over. I went home. I was talking to my friends about it. That this lady comes to me and she says these things. But then when I went home, I just looked myself at the mirror because somebody has come and appreciated you for your personality. And you just look at the mirror and I just realized, why am I laughing at myself when someone's complimenting me and saying that I have something very different planned, like, God's plan, but it's not just accountancy, but also something very different. I gave her a call back that night. I thought a lot about that. Why did I laugh at myself? The curiosity of why just kept popping in my head. I gave her a call back saying, "Ma'am, you said that we need to work on my personality and how how I present myself in front of the audience. Like, I really want to work on it. Can we get on a call?" Cut to like 6 months later, I get my first TVC and my first modeling job in the same month, where I started getting approached by clients for shoots and everything. So that change from accountancy to modeling had given me confidence enough. But my Instagram blew up in the middle of nowhere, where I started posting my small dance videos, and people the audience kept approaching me saying that, you dance really well. Could you teach us? Could you take workshops? And there started my open window as a dance tutor. Yeah. So the exposure that I got from all of the streams all of the career opportunities that I've done, and also
the curiosity of why can't I do this, why can't I do that, and that one open notification of Miss India org saying that registrations are open now is the sole reason why I am here. And efforts, hard work, luck has been lucky enough, and I'm wearing this crown on my head today. You guys must feel like sleeping with the crown, ना? ऐसे पहन के सो जाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा. The first day I was hugging the box. The first day that I got the box, I was hugging the box. You have to tell me, girl. I was just going through this again. Maths Olympiad, Science Olympiad, 7 years topper in school. You're like, मम्मी डैडी को मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं देना है. आपको पढ़ाई चाहिए थी, मैंने कर लिया. Now I want to do what I want to do. How has your journey been? My journey has been full of hard work. मैं जिंदगी में बहुत काम करती थी. Like I used to work really hard because I wanted to be a top of the world. Break all the boundaries that has been set. So पढ़ाई parents ने एक चीज सिखाई है कि you have to do your best at whatever field you work. अगर पढ़ना है तो उसमें भी पढ़ना है 100 मार्क्स के लिए. अगर आप किसी कंपटीशन में जा रहे हो तो जीतने के लिए जाओ. ऐसे ही नहीं जाना था यार खो करके. तो फिर पढ़ाई लिखाई करी. बहुत पढ़ने का बहुत शौक था. I really wanted to grow as an individual and be a topper, and I was very intelligent. Then Olympiad हुआ, उसमें भी sports day आ रहा था, मुझे उसमें medal चाहिए. और even if I'm going for some, I used to be a debater and I used to be in orations as well. So I used to orate also very well. वहाँ पे भी I need to win that competition. So that attitude was built by my mom. कि you have to break. So I just grew up as a very ambitious and a very zealous kid. But I knew I had to do more in life than just be restricted. So all these things came from because my mom really wanted to be independent at the time when she got married, and she could not be. And she realized that I do not have control over my life. I could not take a lot of decisions. I could not make a lot of choices for myself, which that financial independence brings to it. Right? So I've always seen like growing up, okay, this is what's happening, and this is not the kind of life I want. That made me extra hardworking. And my father was also like, so we belong to a very agricultural based family. It was like, आप अच्छे से पढ़ जाना and इज्जत is all what you need. Because क्या होता है, all these like wherever you like to come from, so your upbringing is something really text-based. That made me really ambitious. So I was like, ये भी कर लिया, but I'm not the one who would sit behind a computer work with stuff. I have a personality that really needs to shine. And I am a very fun person. I love to talk. I love being in front of camera. And I love to inspire people. I love to work. And I really want to create a life that years later, people will look, okay, I really want to live like that. I look up to Priyanka Chopra and I'm like, I want to create such a legacy. And from that, I'm like, okay, I really want girls to look up to me in the work that I do. So, बहुत मेहनत करी है, बहुत काम करा है. And I would really want to live that life. I also कि काम करती रहूं और भी ज्यादा. और आप कुछ साल बाद और इंटरव्यू लो, बोलो अच्छा ये भी कर लिया अब आपने. मैंने बोला हाँ, I really want to inspire. Listen, first of all, it's an honor that I'm getting to speak to you guys because you know it just feels like कि अरे ये तो मेरी छोटी cousin नहीं है. You guys give that vibes out, you know. So it just makes it so much more possible for a girl in her household who's just sitting there thinking like Shani said, laughing at herself. मैं भी बहुत हंसती कि मेरी नाक यार मम्मी जैसी हो जाती. Why is it like my father's and stuff like that? But you know that it just gives you that hope of it's fine. You know, if I don't accept myself the way I am and I don't do the things that I want to do in life, क्या फायदा फिर इस life का? Right? Which brings me to you. We have a lot of similar interests. I mean, of course, you know, आप लोगों के साथ भी है, but इसके साथ थोड़ा सा ज़्यादा है. रूबल राजस्थान से हो, first of all, खमागानी. दूसरी बात की हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग मुझे भी बहुत पसंद है. एनसीसी कैडेट रह चुकी है आप. तुम इतना स्पोर्टी बैकग्राउंड से फेमिना मिस इंडिया कैसे बन गई? तो बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड था. मेरी स्कूल डेज में भी आई वाज इन आर्मी स्कूल, तो वहाँ पे भी जो रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. कुछ पैशन अलाउड नहीं होता है स्कूल में. देन एनसीसी में भी आई वाज वेरी टॉम बॉयज टाइप. बट जो क्रिएटिव साइड था मेरे अंदर, आई फेल्ट कि आई नीड टू यू नो सी व्हाट माय पोटेंशियल इज एंड show that creative side to in front of all the people. So then I decided कि ना मुझे इस फील्ड में ट्राई करना चाहिए. मुझे इनिशियली जब मैंने ट्राई किया था तो बस एक शौक के तौर पे आई स्टार्टेड डूइंग दैट. बट धीरे धीरे आई रियलाइज कि ये मेरा पैशन बन चुका है अब. क्योंकि मैं जब
सुबह उठती थी तो ये फील नहीं होता था कि अरे यार काम पे जाना पड़ेगा. I used to feel like yes, I have to go on work. I used to enjoy working and doing shoots and all that. तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया और बट जो चेंज था वो एक्सेप्टेबल था मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो दैट इज व्हाई आई एम फॉलोइंग माय पैशन. ठीक है, तो फिर आपसे ही शुरू करते हैं. दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आस्क ऑल थ्री ऑफ यू. You know how when a girl plays a lot of sports, she is usually termed a tomboy. यार इसको क्या पता मेकअप, सीधा कुछ कुछ होता है कि अंजलि बना देते हैं ना लड़कियों को. वो सोच ही नहीं पाते कि नहीं, a girl can have that and can be also very feminine and know how to do makeup. Tell me one stereotype that you think you've broken with this spin of yours. जो आपको लगता है कि लोग पहले ऐसा सोचते थे अब नहीं सोच पाएंगे. जो आपने बोला, आई थिंक आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर था कि जैसे कि मैं एनसीसी में थी तो एक टॉमबॉयज पर्सनालिटी थी, बट आई हैड बोथ द पर्सनालिटीज. जब एनसीसी जाती थी तो मैं वैसी थी, जब मुझे कहीं कहीं फंक्शंस में जाना होता था, रेडी होना होता था, फ्रेंड्स के साथ जाना होता था, आई ऑलवेज यूज्ड टू मेक श्योर कि आई एम जस्ट फॉलोइंग ऑल द ट्रेंड्स, आई एम लुकिंग प्रेजेंटेबल. वो एक फैशन फॉलो करना हमेशा से ही था मेरे अंदर. तो आई थिंक ये एक स्टीरियोटाइप है कि लड़कियां अगर स्पोर्ट्स खेलती हैं या फिर बहुत ही ऐसे टॉमबॉयज टाइप रहती है तो दे कांट लुक प्रिटी. आई थिंक आज की जो लड़कियां हैं दे कैन स्लेव बोथ द लुक्स. Completely agree with you. Slay everything. Shini, what about you? Tell me one stereotype you think you have broken. I think the same goes to me because I'm a hip hop dancer. For the last 2 years, I've been training in street hip hop. And when you go for dance rehearsals, you have to wear those loose joggers, those loose t-shirts, and you have to tie a bun up like a boy because you're always sweating. And my friends have not seen the other side of me where I am like totally dressed up, totally dolled up. And I still remember we had a party which was through my agency. So my agency had put up a party for all of us. I had given them invites saying that, hey, you know what, you guys are free, guys should come. And guys have never seen me in a dress, in a cocktail dress, and all hair straight and hair blow dried. They come inside and they pass by me. They pass by me and on the phone looking at me and they are like, "Kahan hai tu? Kahan hai tu?" And I'm like, guys, I'm just right behind you. They did not recognize me at all. So that the thing that you can slay the home look, you can also slay the party look. That is the one. Best of bit. Yeah, exactly. I am just so loving this, so much of confidence. What about you, ma'am? Don't call me ma'am. Of course I'm going to call you ma'am. The whole world is going to call you ma'am. You've set an example. Just enjoy it. बताओ तुमने कौन सा स्टीरियोटाइप ब्रेक किया तुम्हें लगता है? दिल की सुनो अपनी. मैं बहुत 18 साल की थी, मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया. आपकी बहुत 18 साल की एज होती है, स्कूल खत्म होता है ना और आप कॉलेज में जाते हो, एक सेफ करियर का ऑप्शन होता है और एक होता है अपनी दिल की सुनो. तो सब मोस्टली बच्चे ना सेफ सुनते हैं और काफी टाइम लगा देते हैं, फिर दिल की सुनते हैं. मैं बेधड़क होके मैं 18 साल की थी तब मैंने मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करा और बॉम्बे आ गई बिना कुछ सोचे समझे. इतना अच्छा कॉलेज, इतना अच्छा कॉलेज छोड़ दिया. सो दैट वाज द बिगेस्ट थिंग दैट मतलब दिल की सुननी चाहिए. देयर इज नो सेफ ऑप्शन, देयर इज नो सेफ ऑप्शन. The only thing is what your heart wants, just follow your heart. So bro, to be your age and to do things that you're doing. It's like risk लोगे तो आगे बढ़ोगे. I agree. Everything has a little bit of risk in life, और वो risk को cross करना is something that makes you what you are. अच्छा मुझे बताओ, क्योंकि पढ़े लिखे हो यार, बहुत पढ़े लिखे हो तुम तीनों, ऑल्टरनेट करियर प्लान क्या था सब? एंड ये मैं स्पेशली इसलिए पूछ रही हूँ ना गर्ल्स, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है आजकल मैं जो देख रही हूँ ऑन इवन ऑन इंस्टाग्राम, सो I could have easily gotten a lot of followers by following trends and stuff, but I focus a little bit more on content that will inspire people. तो आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है यंग जनरेशन को समझना कि इट्स अ वेरी गुड थिंग टू फॉलो योर पैशन एंड गिव इट योर एवरीथिंग, बट फॉल बैक ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. प्लान भी नहीं होगा तो आपको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप जाके अपना सपना परस्यू करो. तो आप लोगों के प्लान भी क्या क्या थे, कभी सोचा था? Yes, ma'am. So even like before, like I knew accountancy was a good thing for me because mom, dad, hospitality में तो एक backup होगा, but रुकता नहीं है. Like that वो like
जब गीत from जब वी मेट says ऐसा लग रहा है कोई ट्रेन छुटती जा रही है, so that feeling was constant in life. It's like तुम जितना भी करो कम ही लगता था. So I हाँ. started exploring all my other options and all my other passions. When I figured out, okay, passion, it comes under the bracket of dance. But when it comes to profession, I can't just keep, I can't have just a active income. I need a passive job as well. I was in awe of social media and marketing. I really wanted to understand how does it work? And I know social media is the next big thing today. I Yeah. started It already interning. is. It already is, and I know within this 20 years, the amount of growth that the soul industry, the only soul of social media has, it's brilliant, and I don't even want to go to what digital marketing, how the world would scale when it comes to digital marketing. So I started interning with no degree, no course, no fast, no crash courses. I just went and started interning with a startup, which was a Gen Z community, Gen Z youth community, and we used to bridge gaps between the brands and the students. I just wanted to understand the concept around how did their minds revolve, and they wanted some fresh ideas from me. So they were more than happy that I joined. 2 years. It's been 2 years. I'm a product executive there, and I'm with a team right now, and I'm building IPs for 20,000 ambassadors today. That It, is phenomenal. And I to think that this is your plan B is okay. Hold on, women, ladies, young ladies, girls, if you're listening to this, understand. Please understand how important it is to plan this entire thing. मतलब अगर मैं अपने terms में कहूँ तो ये लड़की 2 जगह से इनकम कमा रही है और क्योंकि फाइनेंसिंग अकाउंटिंग वाली है तो अपना पैसा खुद मैनेज भी कर रही है. true. Yeah, okay. Whoever, yeah, please, Rubel बताओ. Alternate plan क्या था? I started working as a model at a very young age, but I realized the importance and the power that social media had. तो वहीं से जब पेंडेमिक में we were all stuck at our home, so I decided कि मैं content create करूँगी, I'll build my Instagram, and within 2-3 months I got a lot of rise in my followers, और वहाँ से मुझे collaborations आने लग गए, तो वहाँ से वो एक second source of income बन गया. बट हमेशा से आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन बिजनेस. मैंने बीकॉम किया है, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया इंटरनेशनल बिजनेस में. तो आई ऑलवेज वांटेड टू क्रिएट अ ब्रांड. तो लॉकडाउन में आई डिसाइडेड, बिकॉज हमारे पास बहुत फ्री टाइम था, तो आई डिसाइडेड टू प्लान व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, व्हाट इज द सेकंड करियर ऑप्शन आई वांट टू हैव अ प्लान बी. सो आई डिसाइडेड कि बिकॉज आई कम फ्रॉम अ कम्युनिटी जहाँ पे राजस्थान इज वेरी फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल, इट्स हैंडीक्राफ्ट, इट्स हैंडलूम, और बहुत ही एक ब्लेंड है बहुत सारी चीजों का. So I thought to create a brand जहाँ पे मैं वो represent कर पाऊँ, वो सिर्फ just not in just Rajasthan and country but worldwide. इसलिए मैंने international business में डिप्लोमा भी किया था. तो my plan is to create a brand जहाँ पे जो represent करे राजस्थान को throughout the world. So that is the third plan. कंटेंट लिखने के लिए कोई चाहिए होगा तो प्लीज अप्रोच मी. राजस्थान इज लाइक माय सेकंड होम. Okay. Yeah, I have studied from Banastali, टोंक में जो है. Yes, तो very good call. it's just home. Yes, yes. ये अरे मेरे ऑफिस वाले भी देख लोगे. नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ यार. आई एम नॉट अप्लाइंग फॉर अनदर जॉब विद पीपल, डोंट वरी. दिस इज गेटिंग रिकॉर्डेड ना. चलो लेट्स कम टू शनाटा. शनाटा, टेल मी ऑल्टरनेट क्या प्लान था करियर का? ये तो मेरे को लगता है बोलेगी जो दिल में आता वो कर देती मैं. ये नहीं होता तो हाँ, मतलब ऑनेस्टली देखिए, एक फिलोसफिकल इंसान होता है, एक होता है बहुत प्रैक्टिकल जो प्लान करके चलता जिंदगी. मैं प्लान करती हूँ बट मैं दिमाग से ज्यादा दिल की सुनती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आपको उससे सक्सेस मिलता है. बट सेकंड ऑप्शन इज नॉट अ थिंग. द थिंग इज, अगर आप सेकंड ऑप्शन रखोगे ना, अपना फोकस यूज करोगे तो एक चीज में बहुत बड़ा नहीं जा पाओगे. दोनों चीज में आधा आधा जरूर कर लोगे. तो वो इंसान होते हैं जो लोग थोड़े डर के चलते हैं. मैं न डर हूँ, ठीक है, पर अगर आजकल की जिंदगी हम लोग देखें, एज वुमेन स्पेशली, हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि हम एक ही चीज करते हैं. ये मत सोचो मेरा प्लान भी है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है. तो मुझे पढ़ाई में भी फर्स्ट रहना था, मुझे मिस इंडिया में भी फर्स्ट रहना था, मुझे कोई चीज छोड़नी नहीं थी अभी भी. और अभी रही बात लाइक अपार्ट फ्रॉम मिस इंडिया, आई रियली वांट टू वर्क विद द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन एजुकेशन. आई जस्ट वांट टू लॉन्च अ प्रोजेक्ट ऑन दैट बिकॉज आई बिलीव दैट एजुकेशन इज समथिंग दैट हैज गिवन मी एवरीथिंग. तो एक वो गिव बैक वाली क्वालिटी आती है. I have that entrepreneurial mind. I feel that I'm very brainy. So I've registered a company also.
in media and communications, and I look forward to bring it to life. I have been working as a model. I became financially independent when I was 18 and shifted to a completely new city by my own. So finances are very, very important. To be independent is very important. ताकि अपनी जिंदगी की हर डिसीजंस ले पाओ, अपने दिल की सुन पाओ और रिस्क भी ले पाओ कि चलो एटलीस्ट आई हैव सम सेफ मनी. I will do what I want to, but my life needs to running. So you should have a very balanced approach. Have a like be philosophical, go out all the way, but be mentally very, very aware कि क्या चल रहा है. It's very easy. Nothing's very difficult. इसकी ना बात सुन के मुझे लगता है she is in a couple of years going to introduce herself as hi, this is Dr. Shinata Chauhan. I'm an actress. Dr. Shinata Chauhan. Yeah, by the way, I do that also. और मैं सर्जरी भी कर लेती हूँ. और प्लेन तो मैंने उड़ा ही लिया था. But then I decided it's not for me. It just feels, I'm so happy. I literally could pull your cheeks right now. लेकिन बहुत एक तो दूर हो plus makeup खराब हो जाएगा. Which I know nothing about. अच्छा, एक last question है, 2 questions हैं. But एक last question है जिसका आप मुझे जवाब कुछ 2 points में दोगे. And it's a little dark question, ठीक है? But since everybody will relate to you, I'll ask it anyway. You know, जब आप इस मकाम पे पहुंचते हो जहाँ पे पूरा इंडिया, इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड आपको जानने लगता है globally, you know, you are like stars now. You have inspired so many people. When you're standing on that stage, everybody can see the smiles and the sparkle that you have, the entire glam. But nobody sees what goes on behind it. वो जो struggle है, test है, losing your mind है, you know, going crazy, not talking to anybody वाला phase है. You talk about that phase and tell me 2 things that you know you have learned from it. ये जो स्टेज पे खड़े होके स्पार्कल करने के पहले वाला स्ट्रगल है ना, जहाँ पे कभी कभी ऐसा भी लगा होगा कि आई कांट डू दिस, इट्स नॉट फॉर मी, आई एम गोना किल दैट गर्ल, व्हाई इज शी बेटर, यू नो, ऑल दोस इमोशंस. व्हाट हैज इट टॉट यू एंड व्हाट हैज इट बीन लाइक? I think the first thing that it has taught me is find your happy place within yourself. For me, it's dancing. Even if I'm frustrated today, like, you know, if anything bad happens to me, I'm just having a bad day, I'll go out, I'll go lock my room, blast my music out, and I dance my heart out, and I'm back to normal. So for me, it's dance. For you, it could be meditation. For you know, for Ruben, probably it might be looking glamorous all the time. Yeah. So, but you need to find your happy place. Second, Okay. would be confident in your own skill. Look at like that one thing that has always, you know, that one incident which has changed my life is me standing in front of the mirror asking me why did I laugh when I'm standing. If like you said that, you know, you get frustrated thinking why is that girl better than me. Yeah. Think of that. Stand in front of the mirror and say that I am better too in my own way. Just find your own skill. So the 2 things which I learned from my whole journey, the whole hard work which I went through, was the first thing is that you need to have patience in your life. Nowadays, people want to become successful or achieve heights just on a very young age. But I feel वो patience होना बहुत ज़रूरी है, where, you know, you have to keep working hard and have that self belief in yourself कि एक दिन ज़रूर होगा. अगर failures मिले हैं, 1 मिला, 2 मिला, but कोई बात नहीं. So I feel patience is something which you need to have to pursue any career, to reach any goal. And the second thing was that you need to, you know, have that motivation in yourself. जब कभी कभी होता है, because we come from, जैसे कि हम 30 लड़कियां साथ में compete कर रही थी, तो sometimes you have that thing, you know, कि आप compare करने लग जाते हो, comparison आ जाता है. और especially social media पे everybody is living their lives on social media. वहाँ पे सब अपना पॉजिटिव साइड, सब अपना सिर्फ अच्छा साइड दिखाते हैं, कोई ये नहीं दिखाता कि क्या उनमें कमियां हैं. तो एट टाइम्स हमारी जनरेशन में टेंड टू कंपेयर आवरसेल्व्स टू अदर्स. तो ये कहीं ना कहीं थ्रू आउट द जर्नी मेरे साथ भी हुआ कि आई यूज्ड टू फील कि शायद मैं इतना अच्छा नहीं कर पाई परफॉर्म आज, ये वो जो सेल्फ डाउट्स कभी कभी आ जाते हैं. बट आई रियलाइज दिस वन थिंग कि हम जब दूसरों को मोटिवेट करते हैं, दूसरों से बात करते हैं, वी टॉक वेरी पॉजिटिवली, वी ट्राई टू इंस्पायर पीपल. बट आई फील कि सेम पॉजिटिव टॉक हमें खुद से भी करनी चाहिए. तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. कभी भी फेलियर हो रहा है, सेल्फ डाउट हो रहा है, तो यू जस्ट नीड टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन विद योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट. और यू नो वो इंटरनल जो मोटिवेशन आपको मिलेगा वो बाहर से कहीं से नहीं मिलेगा. तो बी पॉजिटिव, ऑलवेज टॉक पॉजिटिव विद योर सेल्फ
and have that belief in yourself. I swear it just felt like I myself needed to hear all this. You know, ऐसा कभी कभी होता है ना, आप सुन रहे आपको लग रहा है कि अरे हाँ ये तो मेरे उसका जवाब मिल रहा है. पर एक चीज मैं पूछूंगी, ये जो पेशेंस वाला पॉइंट है, ये कहाँ पे मिलेगा? पेशेंस 200 ग्राम चाहिए था मुझे बहुत सालों से, आ ही नहीं पा रहा है. सीरियसली मैं I'll say 5 साल पहले तक मैं बहुत ज्यादा इम्पेशेंस थी. कभी कभी वो इम्पेशेंस अभी भी आ जाता है, बट आई ट्राई टू यू नो लर्न न्यू थिंग्स, और कहीं ना कहीं से आई ट्राई टू हैव दैट पेशेंस की चीजें सही कभी ना कभी पॉजिटिव अप्रोच अगर आप रखोगे टुवर्ड्स योर लाइफ, तो आई थिंक यू विल हैव दैट बैलेंस की यू नो आपकी ग्रोथ को, सक्सेस को भी आप वैसे ट्रीट करो और फेलियर्स को भी आप यू नो बैलेंस रखना बहुत जरूरी. तो आई थिंक व्हेन यू हैव दैट कैपेबिलिटी टू बैलेंस योर सक्सेस एंड फेलियर, then you'll go far. True. I think, you know, it's a constant practice of Yes. balancing between patience and when to be aggressive also. Okay, let's come to Shinata. I think I just realized that Ruben and I think a lot similar in this, and this is something. Great minds do think alike, girl. Yes, I think that's why we're sitting on this like together. So, एक चीज मैंने जो सीखी है, ठीक है हम काम बहुत अच्छा करते हैं, बट मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. एज अ पर्सन मैं बहुत सोचती हूँ, ओवर थिंक करूंगी, कभी डाउट आएगा, कभी नेगेटिविटी आएगी, कभी डर आ जाएगा, बहुत ओवर थिंकिंग हो जाती है, दिमाग इधर उधर जाना पड़ता है. बट सेंटर करना बहुत जरूरी है. आपको रोज याद दिलाना जरूरी है आप कौन हो, क्या आए हो. सकारात्मक की बोल रही, पॉजिटिव टॉक्स बहुत जरूरी है, ताकि आप एक सिर्फ ब्राइट लाइन में खुश खुश चलते रहो. क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचोगे ना, वही अट्रैक्ट करोगे. एक चीज और, जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है. यस, डेस्टिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप डेस्टिनेशन पे क्या है. लाइक आई जस्ट रियलाइज जब मैंने क्राउन जीता, वो मोमेंट ना सिर्फ सेकंड्स का था, बट मेरी जर्नी कई साल की थी. कोई मुझसे पूछता है हाउ डिड यू फील, आई जस्ट हैव 1 or 2 lines to say, but when somebody asks me what's my experience now, I have those 5 years and whole lot of memories to talk about, and वो मेरी रियल फीलिंग्स थी. तो आप जो भी काम कर रहे हो, बस उसको एंजॉय करते रहो, साथ साथ में पूरी मेहनत करो, बट उसको एंजॉय करना बहुत जरूरी है. बिकॉज अगर आप सफलता की सीढ़ी पे पहुंचोगे ना, तो 5 साल मैंने अपनी जिंदगी के दिए, मैं बहुत खुश हूँ. बिकॉज लाइफ इज ऑल्सो हैपनिंग व्हाइल यू आर वर्किंग. These 2 things, take care of your mental health and just be aware of where you are, what you are doing, be present. आपको समझ आएगा, वरना जिंदगी चली जाती है, हम लोगों को लगता है कि मेरे साल चले गए. ये this girl is making cooking sound like a scam. It's like if you don't enjoy the journey, 3 घंटा खाना बनाया, 10 मिनट में खत्म हो गया, है ना? So it's very important you enjoy that process thoroughly. No, I'm serious. This is so amazing. Okay, one final question. ये I'm sure सबने पूछा होगा, और भी questions पूछे होंगे, but शिनाता आपसे ही शुरू करेंगे. Okay. फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा फ्यूचर प्लान मैंने आपको बताया, आप क्या क्या करना चाहते हैं. मुझे आई रियली वांट टू बी अ स्पोक्सपर्सन. आई एम वेरी पैशनेट अबाउट स्पीकिंग एंड raising my voice, and I really want to motivate and inspire people from the work that I do, from the life that I live, from the decisions that I take. I want to live a life that creates a legacy. Somebody like Priyanka, who girls look up to, okay, she did that. She's very inspirational. She's just going in her career. I want to be that full force of life who's making the best use of life. And that's something that I look forward to. I'll be a spokesperson. I really want to be an entrepreneur. I really want to create some opportunity and use my mind. I'm very brainy, I feel. So अपनी creative side balance हो जाएगी by being here, and मेरी mental side भी balance हो जाएगी इसमें. You want to be boss lady, in short. Yes, I really want to be a leader. So I think, you know, you should definitely start a podcast. मैं definitely subscribe करके सुनने वाली हूँ of everything that you've done. It just inspires people so much. Okay, I think I'll keep that point with me. Thank you. ये अगर नहीं किया try, तो you must try. You never know. It might be. And yes, acting and modeling, there are things, but I really want to explore. I don't want to restrict myself. I have been doing But just saying, if you start a podcast, because, you know, even when I'm listening to you, I can totally, like, मेरे को समझ में आ रहा है कि if you talk about these things on a podcast and people listen to you, they'll be really happy. देखने के लिए तो Instagram है, it's a very different medium, but you. I really want people to listen to me. Thank you. इसी बात पे Instagram पे follow कर लेना. नाम बताओ, username बताओ, राशि. नहीं, no. Ajay Rashi official. I followed you guys, you'll know, yeah. But Okay. I know you have contracts and stuff to take care of, it's okay. Chini, tell me. क्या future plan है? करना तो पापा बहुत- का
पापा का बिजनेस एक पार्ट होगा उसमें से, but it's more like, you know, I want to have it all. Like, I know probably would be a little difficult, but I want to have it all. It's more like 20 years down the line, 10 years down the line, I want to be a brand which tries to unify their passion and their profession. Like, नाम से नहीं होगा, but अंदर एक स्टूडियो भी होगा, अंदर एक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन भी होगा जिसमें कंसल्ट कर रही हूँ, एक खुद का ब्रांड नेम होगा, चाहे मैं अपने आप को एक पर्सनालिटी जैसे रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, चाहे पता नहीं एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस होंगी, सक्सेसफुल मॉडल हो सकती हो, डैड का बिजनेस होगा, उसमें नंबर ऑफ ये रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज भी होंगी, तो डैड का भी सपना आगे जाएगा, और ये सब के फाइनेंसेस मैं ही हैंडल कर लूंगी फिर। घर की बात घर में ना, तो सबसे आसान पंचलाइन है तुम्हारे लिए कि पैसे वैसे तो मैं ही हैंडल करती हूँ। I really want to be a brand at the end of the day. You know, it is very refreshing, and I mean, of course, everybody has a dream, but it's so good to see that you guys are also so conscious about the fact that you just don't want to be an actor, or a celebrity, or a star. You want to be a brand, and you want to be like like a whole business. You know, you want yourself to be like a whole business that people can, you know, get opportunities from, create something new and stuff like that. Just so amazing. Rubel, बताओ तुम्हारा क्या plan है? Other than looking glamorous all the time, you wake up like. But can I tell you something about Rubel? She wakes up like this, na guys? She gets up like this. I still remember going to her room to get something, and she's gotten up and she's like, "Oh, क्या चाहिए बेबी?" ऐसा लग रहा है मेकअप करे बैठी है 3 दिन से. गजब यार, blessed हो तुम. Talent stroke, hidden talent stroke. अच्छा बताओ future plan क्या है? As I mentioned before about creating a brand, my one aim is to become an empowered and self-confident woman. So I feel that I'm walking on this path already by following my passion as a model, and now achieved this title. And with this title comes a lot of responsibilities. So my current my aim is to complete those responsibilities and use the opportunities which I'm getting through this platform. Apart from that, as I mentioned before, मैं एक प्लान पे वर्क कर रही हूँ जहाँ I want to create a brand which represents Rajasthan throughout the world. So that is something which I aim for, but I feel कि उसके लिए when you need to start a business, you need to have a lot of experience. So I'm working on that thing. Apart from that, I'm also working as a model, and let's see ये title के साथ और opportunities जो आती है, I'll grab them as well. You know, you girls are so smart. You figured something out जिसके साथ आप खुद ही align कर सकते हो. Like ये the brand that she'll create, Rubel will become the brand ambassador of it. Anyway, she looks so glamorous और ये लगती थी कि हाँ perfect राजस्थानी लड़की के एकदम suitable. शिनी का भी same फंडा है कि पैसे तो मैं कर ही रही हूँ handle, plus I'm creating a branding. और ये तो मैं बता ही चुकी हूँ. Hi, this is Dr. Shinata. By the way, I'm also Bollywood actress. Plane भी उड़ा लेती हूँ. So thank you so much. I am sure this is one of the longest interviews जो शायद अभी तक आप लोगों ने किया हो या पता नहीं मुझे, but मेरे लिए ना ये बहुत सबसे interesting interview था इस महीने का जो मैंने अभी तक किया है, because especially I know that this is going to inspire a lot of other girls out there. Not just about participating in a pageant or beauty world or makeovers, but also of very strong minds कि आपको वो बहुत जरूरी है balance करना. And to understand how your journey is going to shape out and plan it, which you girls have so nicely shown and spoken about. Thank you so much. Thank you. Before I let my guests go, I usually dedicate a song to them. So you have to tell me an old song that you like, because we give him his, favorite old evergreen music. Okay. I will. It's not a very old song, but this one song called Kahi To Hogi Wo. So the reason behind it could be different. Yes, favorite song. Yes, Kahi To Hogi Wo is. Yes. Yeah, it's more like I'm lost in the world and the audience is finding me. Beautiful song, huh? Beautiful song. So here goes, beautiful ladies. कहीं तो होगी वो दुनिया जहाँ तू मेरे साथ है, जहाँ मैं जहाँ तू और जहाँ तेरे मेरे जज्बात है, जाने ना कहाँ वो दुनिया
जाने ना वो है दिया जहाँ मेरी जिंदगी मुझसे इतनी खफा नहीं. Thank you. Wow, you sing really well. बस मुझे दिखाना था कि तुम लोग talented नहीं हो. There are more ladies out there. इसलिए मैंने कहा दिया. Kidding girls, thank you so much. मुझे बहुत मन कर रहा है पूछने का कि शिनी यार मेरे को फिर से डांस स्टार्ट करवा दो. I've become so conscious of everything around me that I just don't feel like moving. I feel like just sitting on my couch and Netflixing all throughout the day. Workshop, you have access to all my workshops. This is on record. She cannot go back. I don't care what the contract is. Thank you so much, girls. Thank You are you. beautiful. Lovely. You rock. Keep at it. And I just hope that very, very soon, not बहुत लंबा time, 2 साल 3 साल में I'm going to interview you not just for being you but for your businesses and for your brands. All the best. Thank you so much. Bye bye. Bye.